हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस सपोर्ट मटेरियल का सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी। इसका फर्स्ट पार्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क्स का है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द ऑर्गेनिज्म ऑन विच मेंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट ग्राम, गार्डन पी, पीनट्स, पीजियन पी। तो किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? मेंडल ने किया था एक्सपेरिमेंट गार्डन पी पे। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो इसका क्या है। A cross between a tall plant T and a short p plant small t resulted in progeny that were all tall plants because क्या होगा? पहला ऑप्शन है shortness is a dominant trait, tallness is a recessive trait, tallness is the dominant trait, and last है height of p plant is not governed by capital T और small t। इसका आंसर हो जाएगा C, tallness is the dominant trait। now question number third says that बता रहा है ए जायगोट हैज ए एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, जायगोट में क्या है? एक्स क्रोमोसोम है फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू ए, क्या बनेगा? ए बॉय होगा। या एक्स क्रोमोसोम डज नॉट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड, सी गर्ल, एंड डी आइदर बॉय और ए गर्ल। तो इसमें ऑप्शन होगा आपको सी। फोर्थ क्वेश्चन सेज दैट a normal cell of human body contains 23 pairs of chromosome. The number of chromosome in a sex cell, sperm or ovum of the human beings is most likely to be। इसमें जो ऑप्शन दिया है ना वो रॉन्ग है, क्योंकि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेक्स सेल जो होता है वो 1 पेयर होता है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है और 22 पेयर इज ऑटोसोम्स। ओके, तो 1 पेयर का मतलब होता है 2 क्रोमोसोम। तो इसमें ऑप्शन सी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 क्रोमोसोम होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स इन एन ऑर्गेनिज्म, उसे क्या कहते हैं? इज नॉन एज प्रोटोटाइप, स्टेरियोटाइप, या फेनोटाइप, या जेनोटाइप। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, फेनोटाइप इज द characteristics in the organism which is visible। Question number 6 says that a cross between two individuals results in a ratio of 9 is to 3 is to 3 is to 1 for 4 possible phenotype of progeny। This is an example of, क्या होता है? किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए है डाइहाइब्रिड क्रॉस, ऑप्शन बी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सी टेस्ट क्रॉस, एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑफ व्हाट क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम किससे बना होता है? ऑप्शन है डीएनए, ऑप्शन बी डीएनए एंड आरएनए, सी डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन, एंड नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको डीएनए से बना होता है क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 8 सेज the number of pairs of sex chromosome in zygote of human is। human में होता है number of sex chromosome 1 pair होता है। okay, now question number 9, which section of DNA provides information of one protein? option A nucleus, option B chromosome, option C traits, and option D gene। तो इसका ऑप्शंस हो जाएगा आपको जीन। ओके, नाउ question number 10 says that the maleness of a child is determined by option A the X chromosome in the zygote, option B the Y chromosome in the zygote, option C cytoplasm of germ cells determines the sex, D sex is determined by chance। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा द वाई क्रोमोसोम्स इन द जायगोट्स डिटरमाइन द मेलनेस ऑफ ए चाइल्ड। Read the assertions and reasons carefully, then mark the correct options out of the option given below। पहला ऑप्शन है both A and R are true but R is correct explanation of the assertion। B है ऑप्शंस आपको कि both A and R are true, R is not correct explanation of the assertion। C is A is true but R is false, and D is A is false but R is true। Now क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं उसका। assertion में है मेंडल चूज ए पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। उसका रीजन बता रहा है कि P is easy to grow
and had distinct, easily detectable contrasting variant of features. तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा. मीन्स एसर्शन सही है, रीजन भी सही है और रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. एसर्शन में है वेरिएशन इज मिनिमम इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कह रहा है कि वेरिएशन जो है वो मिनिमम है. ठीक है, और सेकंड है कि ऑल वेरिएशन इन ए स्पीसीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल. इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल इसका मतलब क्या हो रहा है कि रीजन रॉन्ग है और एसर्शन सही है. ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सी. सी ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन थर्ड सेज दैट assertion में है recessive traits can only be expressed in homozygous condition. ओके, नंबर रीजन उसका क्या है, डोमिनेंट ट्रेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन. तो इसका रीजन रॉन्ग हो जाता है, यानी assertion सही है. इसका मीनिंग है ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन इसका. क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन पी एंड ह्यूमन पी. ह्यूमन बीइंग्स का साइंटिफिक नाम बताना है. तो साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन पी प्लांट का होता है पिस्टियम सेटिवम और ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम होता है होमोसेपियन. क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर आर जीन्स लोकेटेड. जीन्स कहाँ पाया जाता है, उसके लिए जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स में पाया जाता है इन लीनियर सीक्वेंस एंड एट फिक्स्ड पोजीशन पे होता है. क्वेश्चन नंबर 3, नो टू इंडिविजुअल्स आर एब्सोल्युटली अलाइक इन ए पॉपुलेशन. वाई, क्यों नहीं दोनों दो लोग एक सिमिलर दिखते हैं, उसका रीजंस क्या है, कि उसका रीजन है ऑल इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ डीएनए, सो ऑल इंडिविजुअल्स आर नॉट अलाइक to each other. Okay, question number 4 says that what are chromosomes XY and XX known as. XX and XY are sex chromosomes होते हैं, जिसमें female contains XX sex hormones and male contains XY sex hormones. Question number 5 says that give reason Mendel choose pea plant for his experiment. क्यों एक्सपेरिमेंट के लिए उसने चुना था. सेकेंड, ह्यूमन बीइंग्स हु लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर एंड लुक्स आर सेड टू बिलोंग टू सेम स्पीसीज. हाउ, इसका रीजन देना है. तो पहला देखते हैं, मेंडल चूज पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. व्हाई, उसका क्या है, मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द फ्लावर्स ऑफ दिस प्लांट आर बायसेक्सुअल होगा. सेकेंड है, दे आर सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है एंड दस सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन कैन इजीली परफॉर्म. ओके, थर्ड पॉइंट है, द डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वेर इजी टू रिकॉग्नाइज एंड स्टडी. ओके, फोर्थ पॉइंट है, दे हैव ए शॉर्टर लाइफ स्पेन एंड आर द प्लांट्स आर इजियर टू मेंटेन. ओके, उसके बाद देखते हैं सेकंड का, कि ह्यूमन बीइंग्स हु लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर एंड लुक्स आर सेड टू बी बिलोंग टू द सेम स्पीसीज बिकॉज ऑफ दीज रीजंस. क्या क्या रीजन है, पहला है दे हैव सिमिलरिटीज इन द डीएनए सीक्वेंस. ओके, सेकंड है दे हैव डिसेंडेड फ्रॉम द सेम एंसेस्टर. ओके, अब थर्ड पॉइंट है, दे कैन रिप्रोड्यूस अमॉन्ग देमसेल्व्स. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है, वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरली फॉर द इंडिविजुअल. गिव 3 रीजंस टू जस्टिफाई. इसको कैसे करते हैं कि variations are beneficial for to the species than individual because sometimes for a species the environmental condition changes so drastically that their survival becomes difficult. For example, if the temperature of water increases suddenly, then most of the bacteria living in
that water would die. Only few variants that are resistant to heat would be able to survive. However, if these variants were not there, then the entire species of bacteria would have been destroyed. Thus, these variants help in the survival of the species. However, all the variations are not necessarily beneficial for the individual organism. क्वेश्चन नंबर 2 says that distinguish between autosomes and sex chromosome. इसमें distinguish करना है हमें. तो humans have 23 pairs of chromosomes, out of which 22 pairs are autosomes होता है and one pair is sex hormones. जिसमें कि क्या होता है, ऑटोजोम्स क्या होता है, ऑटोजोम्स आर responsible for controlling gene expression and they are important for determining various inherited traits like hair color, eye color and height. Sex chromosomes are responsible for determining the biological sex of an individual. They also play a crucial role in the development of secondary sex characteristics like breast development in females and beard growth in males. Question number 3 says that a cross is carried between pure bred tall plant and pure bred dwarf pea plants. First one is what is the phenotype of F1 progeny and why? Second number है what is the phenotype of F2 progeny when F1 is selfed. तो फर्स्ट का आंसर देखते हैं. इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स लेते हैं कैपिटल टी टॉल लेंगे और इसको ब्रीड कराएंगे स्मॉल टी ड्वार्फ से. तो इसका जो F1 जनरेशन होगा कैपिटल टी स्मॉल टी होगा ऑल हाइब्रिड टॉल होगा. ओके इसमें क्या होता है द फेनोटाइप ऑफ ऑल द प्लांट्स ऑफ जनरेशन इज टॉल होगा because all the plants have genotype means capital T small t and capital T tall is dominant to small t dwarf. Okay now दूसरा देखते हैं व्हाट इज द फेनोटाइप ऑफ F2 में क्या होगा. फेनोटाइप रेशियो ऑफ स्प्रिंग ऑफ F2 जनरेशन 3 tall is to 1 dwarf होगा और जेनोटाइप रेशियो ऑफ स्प्रिंग ऑफ F2 जनरेशन होता है 1 capital T tall is to 2 capital T is to 1 small t. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स में पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन. तो उसका क्या होता है इंडिविजुअल्स हैविंग 2 X chromosomes means similar chromosome XX are female and individuals having 1 X chromosome and 1 Y chromosome means XY are male. All children will inherit an X chromosome from their mother regardless of whether they are boy or girl. Thus, the sex of the children will be determined by what they inherit from their father. A child who inherits an X chromosome from her father will be a girl and one who inherits a Y chromosome from him will be a boy. Question number 2 says that what are genes? Where are they located? Genes are nucleic acid which constitutes DNA. These are located on chromosomes in linear sequence and at fixed position. Question number 3 says that what is meant by dominant genes and recessive genes? Give one example of each. Answer है sexually reproducing individuals have 2 copies of genes for the same trait. If the copies are not identical, the trait that gets expressed is called the dominant trait and the other is called recessive traits. Mendel selected true breeding tall capital T and dwarf small t pea plants. Then he crossed these two plants. The seeds formed after fertilization were grown and these plants that were formed represents the F1 generation.
From this experiment, Mendel concluded that both capital T and small t are tall plants, while only small t is a short plants. In other words, a single copy of capital T is enough to make the plant tall, while both copies have to be small t for the plant to be short. Traits like capital T are called dominant traits, while those that have like small t are called recessive traits. Question number 4 says, what are sex क्रोमोसोम? तो सेक्स क्रोमोसोम होता क्या है उसे जानना है कि व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम. आंसर है, सेक्स क्रोमोसोम्स आर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स व्हिच हेल्प इन सेक्स डिटरमिनेशन. फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर देयर, नेम देम. उसका नाम बताना है. ठीक है, तो आंसर है, जनरली देयर आर द टोटल ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच ह्यूमन सेल. ओके, दिस इंक्लूड्स a pair of sex hormones and 22 pair of autosomes. इसमें क्या होता है, एक पेयर ही सेक्स क्रोमोसोम्स होगा. ठीक है, यानी सेक्स क्रोमोसोम्स जो होगा उसका नंबर होगा 2. ओके, ऑटोसोम्स आर, बाकी जो 22 पेयर्स होता है वो ऑटोसोम्स होता है. वो होता क्या है, ऑटोसोम्स आर ऑल क्रोमोसोम्स दैट आर नॉट सेक्स क्रोमोसोम्स. ओके, इंडिविजुअल्स हैविंग टू एक्स क्रोमोसोम, मीनिंग सिमिलर, अगर एक्स एक्स है तो फीमेल होगा, और इंडिविजुअल्स हैविंग वन एक्स क्रोमोसोम एंड वन वाई क्रोमोसोम अगर होगा एक्स वाई, तो वो क्या होगा, मेल होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द फेनोटाइपिक रेशियो एंड जेनोटाइपिक रेशियो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में. The phenotypic ratio of the offspring is the F2 generation. In the case of a monohybrid cross is 3:1 होता है, और the genotypic ratio of the offspring in the F2 generation in the case of a monohybrid cross is 1:2:1 होगा. लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन 5 मार्क्स का है. इसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग. इसका क्या है, इन ह्यूमन बीइंग्स द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड. The genes inherited from our parents decide whether we will be boy or girl. Most human chromosomes have a maternal and paternal copy, and we have 22 such pairs. But one pair, called the sex chromosomes, is odd in not always being a perfect pair. Women have a perfect pair of sex chromosome, both called X, but men have a mismatched pair in which one is a normalized size and other is a small size. Okay, X, while the other is short one called Y. So women are XX while men are XY. Now we can see the diagram. Okay, here parents father's sperm is heterogametic होता है, और mother's ova is homogamic. Now gametes is reproductive cells को कहते हैं. फादर्स में होगा XY और मदर्स में होगा XX. इसके XX पार्टिसिपेट करेगा दोनों में, तो जाइगोट्स बनेगा. तो आप देखो, फादर का X मदर का X मिलके XX हो जाएगा तो फीमेल हो जाएगा. फिर फादर का X मदर का X मिलके ये इस साइड का फीमेल, मींस 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फीमेल चाइल्ड. एंड दूसरी साइड देखो, फादर्स का Y अगर कंबाइन होता है इधर मदर्स के X के साथ, तो XY हो जाएगा, मेल बनेगा, और दूसरे X के साथ भी XY हो जाएगा तो मेल होगा, मींस 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेल चाइल्ड, और इसे ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं. ओके, अब क्या है कि जैसा कि हमने फिगर में देखा, एज शोन इन द फिगर, हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज एंड हाफ विल बी गर्ल होगा. ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम
from their mother regardless of whether they are boy or girl. Thus, the sex of the children will be determined by what they inherited from their father. A child who inherit a X chromosome from her father will be a girl हो जाएगी, और a child जो one who inherit a Y chromosome from him will be a boy. Question number 2 says that what are dominant and recessive traits? Now second का B है, is it possible that a trait is inherited but may not be expressed in the next generation? Give a suitable example to justify this statement. तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, what are dominant and recessive traits? डोमिनेंट्स क्या होता है? डोमिनेंट्स वो होता है द ट्रेड्स which is able to express itself even in the presence of contrasting traits. Okay, it appears in all the progenies in F1 generation. Recessive क्या होगा? The traits which can express itself only in homozygous condition. It does not appear in the F1 generation. When a tall plant is crossed, okay, second वाला part देखते हैं, when a tall plant is crossed with a short plant, okay, then the first generation F1 plant obtained is all tall plants, okay, but when the F1 generation plants are crossed, the second means F2 generation plants obtained are not all tall, there are both tall and short plants. This shows that the F1 plants inherits their traits from the short plants but do not express it in the presence of the tallness. This is dominant character and transfer it to the next generation.